Then students, today it's the level of teaching. Teaching is the process of sharing thought and knowledge. The purpose of teaching is to bring desirable changes in the learner through learning. Teaching brings socially desirable behavioral change in an individual according to the need of the society and environment in which he is living. Teaching is considered as one of the most rewarding professions. It requires dedications and passion to mold the future generation. So you know that it's not an easy task. Teaching is both art as well as science. Therefore, it has been considered as the pedagogy. तो इसलिए यदि हम कहते हैं कि शिक्षण के स्तर की बात करते हैं, तो शिक्षण के स्तर वह आधार हैं जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। इसमें छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है, अर्थात छात्रों का बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों पक्षों के विकास करने हेतु शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों के उनके मानसिक और बौद्धिक आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। As already you have learnt in first paper, childhood and growing, that there are various stages of the development, growth and development. For the what development? Physical development, cognitive development, social development, moral development. Education is necessary, and teacher play a significant role for the all-round development of a child. Teachers teach at three levels. How many levels? Three levels. This is done keeping in mind the development stage of learners so that desired educational objectives can be achieved. There are three levels of teaching. The name of these three levels of teaching are as Memory level means Smriti Sthar, that is known as the thoughtless teaching, where there is no thought, thoughtless teaching. रट्टाफिकेशन जैसे कहते हैं, next understanding level, that is अवबोध या बोध स्तर, thoughtful teaching. next reflecting level, And this is the most important teaching, that is the chintan या परावर्तन स्तर, that is upper thoughtful level. One by one, we will go for each and every one. First is the memory level. What is the memory level of teaching या स्मृति स्तर या thoughtless teaching किसे कहते हैं? memory level is considered as a thoughtless level of teaching, as in this the level the teaching is done to provide textbook knowledge to students and more emphasis is given to memorization rather than learning. The objective of this level is to just impart information to the students. This level helps in increasing the memory power. It is not considered to be the best, as memorizing without understanding the concept is not good. Memory level teaching lacks insight. The learner learns the material, retain the meaningful material, and reproduce the material as and when required. Herbert is considered as the exponent of memory level teaching. This point you have to keep in mind. The educationist Herbert Spencer, who is known as the father or exponent of memory level of teaching. होता क्या है कि जो प्राइमरी क्लासेस होती है, छोटी छोटी क्लास हैं, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग लेवल, नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर अंडरस्टैंडिंग, रट्टाफिकेशन जिसे कहते हैं। आप अपने बचपन के दिनों को याद करो, जब आप क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में थे, क्लास फर्स्ट सेकंड में, तब आपको टेबल्स सिखाए जाते होंगे हिंदी में। दो एक कम दो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, क फॉर कबूतर, ई फॉर एलिफेंट. There is no understanding, also no reflection, only memory level. तो इस तरह की जो है, दिस इज नोन एज द थॉटलेस टीचिंग। और ये टीचिंग जो है छोटी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ये मेमोराइजेशन हो जाता है, हमारे दिमाग में स्मृति में चला जाता है, और व्हेन एवर वी नीड इट, उसको फिर हम आगे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें रट्टा फिक्सन है। आज भी अब कैलकुलेशन करते होंगे, तो जो बचपन में आपने जो कैलकुलेशन टेबल याद की होंगी, 2 से लेकर 20 तक की टेबल, आज भी आपसे कोई कहे 19 जा, तुरंत बोल दोगे, क्योंकि उस समय वो रट्टाफिकेशन लगाया था। लेकिन अब आप उसका क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, मेमोरी लेवल इज द वन ऑफ द बॉटम लाइन, सबसे कम लेवल की टीचिंग है ये, और हर्बर्ट स्पेंसर इसके एक्सपोनेंट हैं। द टीचिंग मेथड इन मेमोरी लेवल इज रिपीटिशन।
रिपीटिशन, पुनरावृत्ति, बार बार उसको हम रिपीट करते जाते हैं. A for apple, B for boy, C for cat, D for dolly, D for. तो इस तरह से जो है हम क्या उसको बार बार जो है रिपीट करते जाते हैं. दैट इज द रिपीटेशन. रिव्यू, रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चंस. उसके बाद जो है रैंडम चलता था, जैसे 8 9 जा या 9 8 जा, 3 7 जा. ओ फॉर क्या होता है, ऑरेंज. इस तरह से जो है रैंडमली रिवीजन, आस्किंग क्वेश्चन. इन दिस लेवल द टीचर इज स्टेज सेटर. टीचर का रोल क्या है, लाइक एज द स्टेज सेटर एंड रिसोर्स मैनेजर इन क्लासरूम. द टीचर प्ले एन एक्टिव रोल वेयर एज द स्टूडेंट प्ले अ पैसिव रोल. क्योंकि टीचर मेन रोल अदा करता है, चाहे वो बच्चों से पढ़वाए या खुद भी करे. तो पहले टेबल जैसे लाइक एज द पोएम in nursery classes जो है, you know that the rhymes are there. Twinkle twinkle little, टीचर और बच्चे उसके बाद फिर उसको रिपीट करते हैं. दिस इज द मेमोरी लेवल. तो इसलिए द टीचर इज एन प्लेज एन एक्टिव रोल. टीचर जो एक सक्रिय रोल अदा करता है, जबकि जो है बच्चे इसमें निष्क्रिय रहते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग एड्स लाइक विजुअल एड्स, मॉडल्स, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, टेलीविजन एंड रेडियो एटसेट्रा आर यूज. मेमोरी के लिए इन सबको जो है यूज किया जाता है. किसका, विजुअल देखने के लिए, जैसे चार्ट, मॉडल इत्यादि हो गए, मैप्स हो गया, पिक्चर्स हो गए, ऑल दीज. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, इसके बारे में अब हम चलते हैं. तो इसमें The first one is helpful to children for learning a new concept. इट ऑल्सो हेल्प फॉर स्लो लर्नर. जो धीरे धीरे लर्न करते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है. पहला क्या था, जो नए कंसेप्ट है उनको सीखने के लिए जो है आवश्यक है. जैसे हम क्लास 11th में थे, तो वहां पर दो ग्रुप होते थे, एक साइंस और एक आर्ट्स. हम लोग साइंस में थे, तो आर्ट्स वाले जो है इकोनॉमिक्स वाले और रट्टा मारते थे. क्या, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मार्शल. इकोनॉमिक्स साइंस, और दिन भर रट्टा ही मारते थे. मार्शल ने कहा है कि साइंस ऑफ वेल्थ है. तो यहाँ क्यों उनको रट्टाफिकेशन करना था. दैट इज मेमोरी लेवल, कि नए कंसेप्ट को सीखना. इट इज बेनिफिशियल फॉर यंग चिल्ड्रन. जो छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन, यंग स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल. It is useful for acquisition of facts, information of models and structure. जैसे कि जो है इसको याद करने के लिए दूसरा एक तरीका, और जो भी फैक्ट्स है उनको याद करने को, जो एक्वायर करना, उनको लेना, नए इंफॉर्मेशंस को लेना. It is useful for young students because of their intellect as under development, as they have a rote memory. रोट मेमोरी, बच्चों की जो क्या होती है, रोट मेमोरी होती है, इसलिए यंग स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है. दिस इज द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. क्योंकि जब मेमोरी लेवल का होगा तभी रिफ्लेक्टिव लेवल होगा. क्यों, जब हमें याद होगा मेमोरी लेवल में, उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग, उसका बोध होगा, और उसके बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसका परावर्तन कर सकते हैं. देन दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ memory level of teaching. Now there are some of the disadvantages of memory level. क्या क्या disadvantages हैं? Now listen it. It does not contribute to the development of students' abilities. This level involves dominance of teacher. Loss of recall and retention. इसमें recall और retention दोनों loss हैं. Recall mean उसको जो है कभी हम जो है वो recall करना चाहें, तो और retention उसको धारण करना. There is no intrinsic motivation. अंदर से कोई motivation नहीं, केवल ratification है. Interaction level is low in the classroom. Intelligence does not carry an importance in this type of the teaching, and it lacks motivation. Students don't get a chance of self-learning. Now this one was the first, that is the memory level of teaching. Now next comes as the understanding level. What level? Understanding level. Okay. In this level of teaching, students interact with the concepts and comprehend the content. One more word has been added to here. उसमें क्या था, concept is learned. यहां पर आ गया comprehend, समझना. कंटेंट, उस कंटेंट को समझना है. यहां पर जो उसके बाद की जो लेवल है, मेमोरी लेवल के बाद अंडरस्टैंडिंग, यहां पर उसको समझना. द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन द वन एट द मेमोरी लेवल. फर्स्ट इज द मेमोरी लेवल एंड सेकंड वन इज द अंडरस्टैंडिंग. ये उससे थोड़ा हायर लेवल की टीचिंग है.
Teachers use debates, seminars, explanations, and other similar methods in this level. क्या क्या यूज किया जाता है? डिबेट्स, जानते होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता, सेमिनार्स हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, और यहाँ पर और भी इस तरह की मेथड्स यूज की जा सकती है। At this level of teaching, the teacher explains the student about the relationship between the principles and facts and teach them how these principles can be applied. एक सम बता दिया जो है, जैसे मैथ्स में डिवीजन कैसे होता है, उसके बाद यू कैन अप्लाई इट। तो टीचर ने क्या किया, एक बार बताया, समझाया, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, बच्चे ने पहले रट्टा मारा तो वो मेमोरी लेवल था, यहाँ पर जो है टीचर ने समझाया, बच्चे की समझ में आ गया, उसको कैसे फिर अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई करने वाली बात जो आएगी वो आएगी आपका कहाँ? रिफ्लेक्टिव लेवल में। The new the new knowledge acquired at this level is related to the earlier knowledge gained. The understanding level of teaching is supported by Herbertian theory of appreciation. It states that this level of teaching seeks the learner to acquaint himself with the relationship between facts and principles. Morrison is the main proponent of the understanding level of teaching. Earlier in memory level, याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर was the proponent main, जो उसका जो है जिसे प्रतिपादक कहते हैं या जिसने दिया, वहां पर हर्बर्ट। एंड मॉरिसन इज द पर्सन और द स्कॉलर और द एजुकेशनिस्ट हु गेव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो इसको प्रतिपादक थे। However, it also called the explanatory level of the teaching. Understanding level को हम क्या कर सकते हैं? Explanatory level of teaching भी कर सकते हैं। In this level, the teacher use lectures, decision methods, and explanation. Now we shall go advantages of understanding level of teaching. The first one is development of different cognition learning. Enables a student to have complete command over subject material. Learning is more effective as students make use of their thinking abilities. Mental development of the learner is higher compared to that of memory level. Set stages of entering into the reflecting level of teaching. Yes, after memory level, what comes? Understanding level. And it prepares for the reflective level of teaching. Therefore, it is the stage entering the reflective level. The interaction level between the teacher and the student is good. There is effective classroom interaction. Earlier in memory level, we have learned that there is no complete interaction, full interaction, that is equal instruction in interaction. What I was going to tell you, the teacher is active and student are passive in memory level, whereas in understanding level of the teaching, both student and teachers are effective in classroom interaction. Now there are some of the disadvantages, जहां पर उसकी अच्छाइयां हैं तो कुछ disadvantages भी हैं। वो disadvantage क्या क्या है देखिए अब आप। It ignores higher cognitive abilities. ज्यादा जो संज्ञानात्मक एबिलिटी है उसको ये इग्नोर करता है। There is less emphasis on Intrinsic motivation. You know, extrinsic, जब मैं आपको कर रहा हूँ आप कर सकते हो, कर सकते हो, that is extrinsic motivation. जब मैं अंदर से कहूँ yes I can do it, I have the ability, that is the intrinsic motivation. तो यहाँ पर जो है क्या रहता है कि ज्यादा intrinsic motivation नहीं है, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मेमोरी लेवल हो गया, समझ लिया, इतना काफी है। It is more teacher centered. Yes, it is again teacher centered है। It does not promote individualized learning. इंडिविजुअल लर्निंग या व्यक्तिगत अधिगम के लिए जो है प्रमोट नहीं करता है। तो इन दिस वे दिस वाज द सेकंड। फर्स्ट इज memory level of teaching, second is the understanding, and third one is the reflective level. हिंदी में पहला था आपका स्मृति स्तर, दूसरा हिंदी में बोध स्तर। नाउ रिफ्लेक्टिव मीन चिंतन या परावर्तन, चिंतन जो हम कर सकते, जो हमने जो है किया उसके बाद हम उसको आगे रिफ्लेक्ट कर पाए, दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यस मैम। This is the most advanced level of teaching learning activity. It is also called introspective teaching. It goes beyond comprehension and requires students to focus on what they have heard or understood. This is the level of instruction in which the instructor encourages and stimulates students to think about and reflect on the content and concept they have learned.
Reflective teaching does not depend upon memorization. It rather depends on reasoning, analysis, and thoughts. The role of the teacher in this level of teaching is democratic. He or she does not force knowledge on the students but develops their talents and capabilities. Students learn to face real problematic situation by understanding the situation and using his critical abilities in solving the problem. It also helps learners to explore the field of knowledge, to discover and to understand and present generalizations in the light of new evidence. Then now you can understand that what comes in memory level and what comes in understanding level and what happens in reflective level. मेमोरी लेवल में अब आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे आपने वो जो है बापू की एक कहा कविता पढ़ी, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो साथ में ध्वजा रहे, ये छोटी क्लास में हमने रट्टा मार लिया, मेमोरी लेवल था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ये तो बापूजी जो जब चल रहे थे तो उनके साथ साथ ये था, जो है वो आपका क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल। लेकिन उसके बाद उसका क्या परिणाम है, कैसे क्यों किया, किस लिए किया, व्हाई, द रीजनिंग, द थिंकिंग, इट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टिव लेवल। बीए इंग्लिश जिसने किया होगा, ला बैले टाइम सेंस मर्सी, जॉन कीट की थी, तो पहले तो आपने केवल पोएम की 4 लाइन याद कर ली। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जॉन कीट ने जो अपने बारे में लिखा था, क्यों, कैसे, उसके बाद लास्ट में व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट, व्हाई ही हैज रिटन सो, एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, और उससे हमें जो क्या भाव मिल रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल। एज यू नो दैट इन साइंस में आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है, या थर्मोडायनामिक्स लॉज। पहले आपने रट्टा मार लिया, अच्छा ठीक है जी, इंथैल्पी यहां से वहां शिफ्ट होगी, वहां से यहां शिफ्ट होगी, बस छुट्टी। उसके बाद देखा कितना हो रहा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, और किस किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला, एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन there are the three levels of the teaching, that is memory level, understanding level, and reflective level. At the reflective level, a learner can achieve this only after memory level, क्योंकि जब तक मेमोरी नहीं है तब तक आगे याद नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा। मैं कोई चीज बताऊंगा, मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे वो याद होगा, मेमोरी स्मृति में होगा, और उसको मैं समझ रहा हूंगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसके बाद जो है तभी मैं उसको रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा। तो डियर, इसलिए हम कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट, at the top of all three levels. The pupil occupy the primary place, whereas the teacher occupies the secondary place. Main objectives of reflective level of teaching, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं मैम बता रहे हैं। To develop creative and critical thinking in वाह, students. वेरी गुड, ये याद रखना आपने, क्रिएटिविटी, ठीक है। जब तक हम जो है क्रिएटिव नहीं बनाएगा, कुछ नहीं करें, तो इस रिफ्लेक्शन से कोई फायदा नहीं। एंड ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग, to develop the ability of the decision making and independent thinking in students. To, And to develop the ability of problem solving in students. Advantages of now advantage of reflective level, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या लाभ है, एक एक करके देखते हैं। It helps in the development of problem solving skill. It is the most useful for gifted children. It is most thoughtful mode of operation. It provides maximum flexibility and helps develop creativity. Learn centered. That is, it is the learner center, जो सीखने वाला उसका centered होता है। The teaching at this level is learner centered. This level of teaching is appropriate for higher classes. This level provides self motivation. और इस तरह से अब हम चलते हैं disadvantages of reflective level of teaching. This level is not suitable for lower classes. It is a time consuming process. It is suitable only for mentally and matured children and not applicable for dull students. There is excess burden on teachers. This level of teaching is not suitable for Indian classrooms. In this way, students, today we discussed about levels of teaching.